Good evening, everyone. Welcome to the show presented by Kala, Crazy About Literature and Arts, in association with Let's Talk. Let's Talk is creating safe spaces through shared journeys, shared conversations, helping people to connect, reflect, and grow together. There's a lot happening at Kala. We are really going crazy about literature and arts. Are you going to be there during the Kala Literature Festival at New Delhi on 7th and 8th February? Will you be joining us for the silent book reading of Kala Literature Club at Chapters Gurgaon on 18th January? We are excited as we prepare to publish our first anthology, Light of Spring, featuring 43 of the best upcoming Indian writers. And we have this show and the wonderful guest that we have tonight. But before that, very quickly, we are also recording this episode, and the complete recording will be uploaded on the Kala YouTube channel at Sanjay Chandra 5376. Now, let me introduce to you the moderator for the evening. From the erstwhile city of Bombay, Mridu is a consummate people's person. The Gemini in her ensures a vivid imagination and wonderfully eclectic reading choices. Mridu truly believes that no man is an island, and her professional journey reflects this. Always at the front desk, whether in hospitality or in school administration. So that is Mridu Manocha for you. Good evening, Mridu. Indeed. Now, let me introduce to you the guest of the evening. Juhi Gupte is an award-winning poet, editor, translator, and cultural entrepreneur whose work in Hindi, English, and Marathi explores identity, empathy, love, and the quiet complexities of urban life. Her acclaimed Hindi poetry collection, Amaltas Ka Aanchal, was launched at the revered Sahitya Akademi, New Delhi. This book has been honored with the Best Book Award 2024 and embraced by readers across India, Spain, Peru, and Guatemala. अमलतास का आंचल कवियत्री जूही गुप्ते का हिंदी काव्य संग्रह है। इसमें जूही की लीक से हटकर कविताएं हैं जो शहरी जीवन की न्यूनता, भावुक प्रश्न, सद्भाव, प्रेम जैसे विविध विषयों को उकेरती हैं। ये 50 कविताएं हर पढ़ने लिखने वालों को समर्पित हैं। In fact, I think many of you know this already, but still I would like to say, इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी है पढ़ने लिखने वाली. So that's Juhi Gupte for you. So sit back, relax, and enjoy the show presented by Kala in association with Let's Talk, featuring Juhi Gupte in conversation with Mridu Manocha. Over to you both. Thank you, Ji. Hi, Juhi. Hi. Hi. So, Juhi, आपने मेरे साथ कुछ पंक्तियां शेयर की थी, but before we go there, what actually touched me was, you do understand, obviously, मैंने आपके ऊपर थोड़ी research करी, read about you, and there are these 2 lines from one of your poems, which is amazing, and I want to start with that. ये पंक्तियां मैं बोल दूं because I need to read them out. हाँ ठीक है. Okay. So please, everyone, bear with me for a moment more.
The lines are, क्या क्या लिखना बाकी रह गया था, मेरा खुद से मिलना बाकी रह गया था, सपनों की शॉल ओढ़े सिमट गई थी, उसे गले लगाना बाकी रह गया था. मेरे ख्याल से the last time I ever heard anyone use these lines was, I think, maybe an Irshad Kamil or Gulzar Saab. But all said and done, I think, मैम, ये बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी. Thank you so much. Thank you so much. So on this note, as we move forward, the opening lines that I just narrated earlier. So as I was mentioning, it was a very Gulzar Numa kind of a line. So उसी बात से शुरू करते हुए, let me first ask your inspiration for writing something like this. पहली बात तो, why this title Amaltas? Yeah, so Amaltas is the tree which is present in urban areas. मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़ों को, मेरे सीनियर्स को गांव के बारे में लिखते हुए, और मेरा अपना कोई गांव नहीं है. मैंने कभी ऐसे प्रॉपर्ली गांव नहीं देखा. मैं अर्बन रेस्ड चाइल्ड हूँ और मैंने वही देखा है. तो मुझे लगा कि अगर जो है किसी को शहरी जीवन से कुछ सीखने मिल रहा है, क्योंकि मैं लिखती हूँ रियल, जो है वो फैक्चुअल लिखती हूँ. मैं पोएट्री में एस्केपिज्म नहीं देखती कि आप, इट इज नॉट एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी. तो मुझे मेरे पोएट्री में आपको पोल्यूशन मिलेगा, मेरी पोएट्री में आपको जो है माइक्रोवेव मिलेगा, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जो आप रोजमर्रा देखते हो, जो आप क्योंकि तार्किक तौर पे आप देख पाते हो. तो अमलतास वो पेड़ है जो मुंबई में भी होता है, जो दिल्ली में भी होता है, जो गांव में भी होता है. और एक बार सड़क पर कहीं जा रही थी बॉम्बे में शुरुआती दिनों में, तो मैंने उसके जी. जो फूल है उनको बिखरा हुआ देखा था रोड पर, और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि ये जो टाइटल है वो कविता का मेरी टाइटल है, अमलतास का आंचल, जो जी. सरस्वती जी को डेडिकेटेड है, देवी सरस्वती को, कि अगर आप हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते कुछ बहुत अच्छा लिखने का, तो एक अगर पीली सरसों नहीं दे सकते तो कम से कम अमलतास तो दे दो. तो ये उसका जब कविता शायद पढ़ूंगी तो उसमें आपको मायने समझ में आएंगे ज्यादा. अच्छा, तो पर हाँ. आपने अपने को एक्सप्रेस करने के लिए कविता का माध्यम क्यों चुना? कई लोग कहानी भी लिख लेते हैं. यू कुड हैव आल्सो हाँ. रिटन अ हाँ. स्टोरी. So then how आई come? डू राइट. हाँ, आई डू राइट स्टोरीज, बट कविताओं में ना राइमिंग होती है. तो बचपन से मुझे वो वर्ड प्ले जो होता था, हिंदी में कहिए या इंग्लिश में कहिए, दोनों लैंग्वेजेस में या संस्कृत में भी, हम लोग जब स्कूल में टेक्स्ट बुक में पोएट्री पढ़ते हैं, मैं बहुत रिलेट कर पाती थी वो राइमिंग स्कीम के साथ, या फिर बहुत कम Right. शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना. तो वो बहुत अच्छा लगता था, इसके लिए पोएट्री. एंड आई थिंक पोएट्री ने चुना मुझे. इट्स अदर वे अराउंड, नॉट मी लाइकिंग पोएट्री. ऑफ कोर्स आई लाइक, बट देन Okay. इट्स ऑलवेज अदर वे अराउंड. So you are basically a reader कि बस just एक शायराना के तौर पे रीडर बन गए. आई एम फर्स्ट अ रीडर, मृदु मैम, ऑलवेज. तो इसलिए Wow. पढ़ने लिखने वाली में पढ़ना पहले है, लिखना बाद Okay. में है. तो आई एम ऑलवेज अ कनोशर, लाइक आई एम ऑल्सो क्रेजी अबाउट आर्ट एंड लिटरेचर. दैट्स द रीजन आई एम हियर. And because I am from electronics background, and like हाँ with जी. with this science background, it was never a literature kind of a thing which I really studied. तो it is not लिखना, it is more पढ़ना. I'm mostly a reader. Okay. But then how come आप एक साइंस बैकग्राउंड से होते हुए राइटिंग की तरफ रुझाव किस तरफ बढ़ा आपका? कैसे आया? एक्सीडेंटल. जैसे कि एवरी अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया वांट्स देयर किड टू बी, कि पहले इंजीनियर बन जाओ, बाद में जो करना है करो. तो सेम हाँ गोज विथ मी जी. व्हेन आई वाज like getting educated. It was always there. So I took PCM, physics, chemistry, maths, and then I did electronics. And I always had this thing for literature. Everybody at my home reads. In fact, my uncle writes Okay. well. My father's brother, he writes too well. Our genres are very different. Okay. He's into satirical, he's into political, articles, और वो गद्य ज्यादा लिखते हैं. एंड घर में था कि Okay. सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ते थे, तो देर वॉज जी. दिस हिंट ऑफ रीडिंग बुक्स. हाँ So जी. maybe हाँ that जी. kind of motivated me. Okay. So what is your पसंद वाला genre? Besides now that you are an published Kavitri,
आपका जॉनर क्या है बुक्स रीडिंग में खास करके? फिक्शन ऑलवेज। मुझे वो नॉन फिक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने। हाँ जी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट हॉरर मिस्ट्री आई रीड। So this is a girl after my heart, folks, who loves her fiction work. Okay, Juhi, my next question to you is, ठीक है, या most of us, our generation, grew up in English medium, studying the language and literature and everything. या How come या you chose to write in Hindi? जब लिखने पर बात आई, आपने हिंदी हम्म। कैसे चुनी? Why did सो you choose हिंदी to केम write in नेचुरली टू Hindi? मी। मतलब मेरे साथ ऐसे था कि बिकॉज माई थिंकिंग लैंग्वेज, आई एम रेज्ड इन इंदौर, सो अवर जी local language is Hindi. My thinking language is Hindi. So whenever I'm not at school or I'm not doing business or I was not in college, I was always speaking Hindi. So that was my first language. और ओके बहुत अच्छे लगते थे हिंदी पोएट्रीज। और एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आई ऑलवेज गॉट वेरी गुड लैंग्वेज टीचर्स। सो मुझे हिंदी में जिन लोगों ने पढ़ाया है, मेरी टीचर आज भी मेरे टच में है। एंड द वे दे जनरेटेड आर इंटरेस्ट इन हिंदी पोएट्री, ओके I cannot tell you what it meant for me. दैट्स नाइस। इट्स that आई थिंक गुल विल घूम फिर के ना बात हमेशा इस बात पे आ जाती है कि यू हैड अ गुड टीचर, दैट्स हाउ द Yeah. लव फॉर अ सर्टेन सब्जेक्ट और अ सर्टेन Yeah, genre yeah, comes yes, into yes, most definitely. I had the amazing I English totally teachers. I had relate with amazing you. Hindi teachers, and जी I actually, my formation years. Now that I look back, कि मैं क्यों इतना अच्छा सोच पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, that जी their contribution is integral to my journey. जी So I would like everyone also to understand that this lady, besides coming in from an electronics engineering IT background, she is also a winner of awards like Rashtriya Shikhar Saman and the Golden Pen Award for her works. Her themes are urban life, love, emotions, and she also hosts podcasts herself. So ये बहुत diverse एक lady है। अगर हम कहने बैठें तो she is a poet, she's an editor, she translates, she's a blogger, she's been jury member at various literary events. She writes in Hindi and English. And another thing that everyone should know about her is that besides talking and writing, she also knows how to use her fingers to do the sign language. So she just doesn't wield the pen. She can also talk in sign language. So that is amazing, Juhi. How did you learn that? Again, part of my journey, I always thought that I should learn sign language. I have a family member who is deaf. So this is how it also was my, like along with my mother tongue Marathi, sign language became my daily life. And to know more, I kind of learned as a volunteer sign language interpreter, and I assist deaf people in their work if they want me to kind of like be along with them to any application or any interviews or anything I can be of assistance to them. Ji. So it's Really Indian sign exciting. language because sign language has, again, it's a big topic to discuss, and it has several forms. Hmm. What I know is Indian sign language. तो इसमें क्या फर्क है? I'm sorry to digress from being talking Hmm. about books. This is something a very Sure. new nuance. What is the difference Hmm. in Indian Sign Language and maybe say a Western Sign Language as such? So, हिंदी भाषा yeah, क्या I'll है? give you a very simple example that our audience can relate to. So, in Indian Sign जी Language, maybe we can say name. When I have to, kind of mention name, I would say this. I would move my two हम्म, fingers on my left arm, or if I'm a जी lefty, then on my right arm, and I would just say that, what's your name? So, but then in Western Sign हम्म, Language, it will be different because they do not tattoo हम्म, their names on hand, essentially. So, cultural focus अच्छा is always there. Let's say I have हम्म, to simply tell I'm a Hindu, then I will do this because I would put a tilak. हम्म, Or I'm a Tamilian, then I'll put a nose ring. Or to denote a woman, I'll put this a nose pin. Or to denote हम्म, a man, I'll put a mustache. So जी all these things, the way we kind of are conditioned to understand, it becomes हम्म, it's a pantomime basically. In Western Sign Language, ओके I'm not very well versed with American or British Sign Language, but they have their own way to kind of sign the जी things. Basically, the जी alphabet A to Z will remain same, and what we follow in Indian Sign हम्म, Language is essentially the British version. But yes. अच्छा अच्छा ओके. So also tell us about your blog. I believe you write a blog
by the name of My Heart. It speaks 1,000 words, something to that effect, if I'm not Yes, mistaken. yes, Mridum, I'm right. I mean, you Tell us have done a about lot of it. research already. So yeah, this is a Thank WordPress blog that I came up with because I wanted all of it to be collected at one place. Because you. well, my writer friends will agree with me that we, kind of write in diaries or here or there on the forums, and then we kind of never collect it. So the content gets displaced, and this was precisely the reason I started a blog and Mm, wanted to know what others think. So it is a mix of my poetry, my two-liners, any forms of mm, poetry that I try, or my articles which are not so known as my identity yet because I'm not very good as into kind of that article writing. I do not consider myself at the level I should publish, but there have been some publications. So this is about the blog. It has all the content that I have written till today. Okay. So you've also Yeah, written short stories and other novels and things, and is yeah, it I just do. poetry abhi tak? What all have So you I written? did short Tell us stories about it. with encouragement from my fellow colleagues who are into writing fraternity. They said that Juhi, you should try this, and when I tried, they liked it. So I'm Mm-hmm. going to try it more. And a few of them Okay. were published recently. In few of the there was a motivational anthology called Kari for Spirited Soul, and Mm-hmm. which was edited by Dr. Maitri Joshi and Nitya Shukla. And both of them are amazing, kind of contemporary writers of today. So when I sent them, they liked it, and they said, "Why not try it more?" Mm-hmm. So have you written a little more commercial, as in like for the entertainment industry? Are you Not yet. Not working yet. towards? Not as yet. Okay. So right now you're No, just not writing yet. Not yet. for our entertainment, I should say. So those Yeah, I mean, things. again, there was some senior who told me, जूही कविता है ना जो आप लिखते हो वो मनोरंजन नहीं होता है. Entertainment has a different space, but yes, I haven't never written commercially yet. I've been paid for some translations of the books I did, and जी. I have also been, kind of Mhm. appreciated, or there was a token of like amount given to me for certain work that I did, but never commercially written for any entertainment business. That's good enough for us here. You're writing for our pleasure. That's more than enough for us. So, people, I will Yeah. request everyone to pick up this little poetry book of hers, which she has mentioned. उसका नाम है अमलतास का आंचल. उसकी जो ओपनिंग एक पंक्ति है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. प्लीज जरा सुने एंड एक्सक्यूज माय लिटिल हेजिटेशन वाइल रीडिंग इट आउट, क्योंकि मैं कविता जरा थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है उसको एक सही तरीके से पढ़ पाना. सो प्लीज बेयर विथ मी. सो जूही लिखती हैं, कविताओं के बारे में लिखती हैं कि कविताएं क्या हैं, वो किस तरह से इनको महसूस करती हैं. सो वो लिखती हैं, कविताएं निवेश होती हैं, लिखने वाले के अनुभव व कल्प की पूंजी पढ़ने वाले की पूंजी से जा मिलती है, और दोनों समुद्र हो जाते हैं हमेशा के लिए. कितनी खूबसूरत बात है कि एक इंसान अपनी पूंजी दूसरे इंसान की पूंजी के साथ मिला देता है. इट इज सच अ ब्यूटिफुल थॉट जूही. ये सब चीजें Thank you. आपने Thank you. कहाँ से कैसे सोची? प्लीज यू हैव something about this. In fact, before we I go don't know. ahead, It came up. I correct. mean, I credit goes to my husband, who is a banker, who is in investment banking. So for me, I mean, it was a trait that which we do, that whatever I write is given to you, and बहुत ही अच्छा एक equation है कि वो double हो जाता है दोनों के लिए. तो it's my capital which is given to you and your capital coming to me. So लिखने वाले की पूंजी पढ़ने वाले से जा मिलती है और दोनों समृद्ध हो जाते हैं हमेशा के लिए. कमाल है यार, कहाँ तुमने फाइनेंस को रोमांस के साथ और कविता में जोड़ दिया. ये तो एक अलग ही समावेश बन गया आज तो. वेरी Yeah, वेल. because poetry is investment for me. I mean, I'm a pakka entrepreneur. I'm a person who does business, so I understand numbers. बट दिस इज हाईली क्रिएटिव, आई मस्ट से. बहुत Thank रोमांस you. भरा वाला नंबर क्रिएटिव है ये तो. Yeah, yes. Thanks. It just प्लीज. came up. I mean, I really do not have any reason why I did write it.
I could mention whatever. वेरी वेल. इनफैक्ट मोर देन दीज टू लाइंस, जो ओपनिंग लाइंस थी ना, वो तो बहुत कुछ बाकी है अभी. इतना Hmm. खूबसूरत लगा मुझे. इट वाज सो ब्यूटीफुल. इट रिमाइंडेड मी ऑफ अनदर लिटिल नज्म, जो मैंने हाँ, एक पाकिस्तानी प्ले में देखी थी, जिसकी सिर्फ अगेन 2 लाइनें ही मुझे याद है. इट वेंट sure. समथिंग लाइक, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू के मानिंद सांस साकिन थी. क्या सो बात, इट इज, क्या बात. ये ना 2 लाइनें जो सिर्फ इतना एहसास दिलाती हैं कि कभी एक जमाने में हम भी प्योर होते थे, फिर जिंदगी हाँ, की आपाधापी में हम गुम हो गए, टाइप काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो. सो आज yeah. आपकी ये लाइन ने तो मुझे उसका एहसास दिला दिया. पर चलो, लेट्स डू अ Thank you लिटिल so much. रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ Sure, आवर शो का वर्जन में. सो sure. चलो, तुरंत फटाफट. जूही, योर फेवरेट जॉनर, Fiction. योर फेवरेट बुक. Mm, many actually, but I'll say Rashmi Rathi. सॉरी, विच वन? Rashmi Rathi, Ramdhari Singh Dinkar. It's Bible for me. It's my go-to book. क्या बात है, इतने सारों में से आपने क्या चुना. लवली, एक्सीलेंट, Yeah, ब्यूटीफुल yeah, चॉइस, आई मस्ट से. सो yeah. देन तो फिर लाजमी नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हु इज योर फेवरेट ऑथर. तो वो तो फिर साफ हो ही गया कि कौन है अब. हाँ, मतलब मृदु जी अभी इस लेवल पे आकर तो मुझे कॉन्टेम्प्ररी में बहुत लोग पसंद है. हेमंत देवलेकर को पढ़ रही हूँ आजकल. और ओके. दिनकर तो सूर्य है, उनके आगे सब दिए हैं. तो मेरे आई थिंक लिए रामधारी सिंह दिनकर विल ऑलवेज स्टैंड अ टॉप चॉइस. वो तो मतलब गॉड ऑफ लिटरेचर ही हो गए हमारी हिंदी या राइटिंग. ही इज. राइट एट दैट लेवल ऑफ मुंशी प्रेमचंद एंड अदर्स. तो वो या तो ऑफ वही कोर्स, ऑफ उसी कोर्स. लेवल पर है. यप, सो यप. बिल्कुल सही. आप अपनी, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, देखो बुक्स के लिए रैपिड फायर में ना हम बुक्स रिलेटेड यही क्वेश्चन होते हैं. आपका फेवरेट ऑथर, फेवरेट जॉनर, फेवरेट बुक. हाँ, अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपनी पसंदीदा कोई लाइनें, कोई नज्म कुछ सुनाना चाहेंगे हमें. या मैं इसी बुक से सुनाती हूँ. और जी. नहीं, अपनी लिखी एक हुई, बिल्कुल साथ नहीं. हाँ जी. अपनी लिखी हुई. हाँ, मेरी लिखी हुई सुना रही हूँ. जी जी. तो मेरा फोकस और भी रहता है लॉस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री पे. जी. वो शायद मैं बताना यहाँ पे चाहूंगी कि आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट. और एक मुक्तक लिखा था, शहरी कविता. उसकी अच्छा. सुबह नहीं होती चिड़िया की चहचहाट के साथ, ना ही बेतुके ख्याल आते हैं उसे, सौंदर्य रस से नहाने जैसे. छटपटाहट है स्वाभिमान के लिए, वो झटपट निपटाती है काम. मन में बजते हैं सैकड़ों अलार्म, निकल पड़ती है रेस में, प्रदूषण वाली हवा से लड़ते हुए. उसे वक्त नहीं पायल छनकाने का, किसी कवि मन को बेवजह बहलाने का. भटकती है, संभलती है, तय करती है अपना रास्ता. उसे स्वच्छ ताजी उपमाएं भाती हैं, सदियों पुरानी माइक्रोवेव की हुई. नदी धरती चांदनी से तुलना नहीं, मन की विलोचना दिखाते, घिसे पिटे जंग लगे अलंकार, या प्रेयसी देवी लज्जा सज्जा जैसे उपसर्गों से खून खौलता है उसका. कैद नहीं, पसंद है स्वच्छंद उड़ान, साहस वाला निखार लिए. बेबाक बोलती है, निर्णय लेती है, आत्मनिर्भर हो कलम संग खड़ी रहती है. दुर्गंध नहीं आती उसे पढ़ने पर, मौलिकता की महक होती है. वो सोन जूही की बेल है, आकाश भेदना उसका ध्येय है. नई पीढ़ी के स्वर स्याह करेगी, सड़े गले छंद नहीं. दिस वॉज इट मृदु जी, शहरी कविता. वाओ. वाओ. वेरी वेल रिटेड. पर थोड़ा सा अब इसके बारे में समझाएं, बिकॉज जरूरी नहीं है हाँ, हर किसी को हर वक्त सारी पोएम समझ में आ जाए. जी थोड़ा सा जी इसका जी जी. एक्सप्लेन है, वो समझाएं So आप. it is about an independent woman, anybody like you, me, everyone who is, kind of taking their decisions on their own and they're being जी. mindful. So उनको वो praises आज आप किसी लड़की को या आप किसी लेडी को बोलोगे कि आप बहुत चांद जैसे दिखते हो, आप बहुत इस तरह से दिखते हो, तो उससे वो टच नहीं होगा. Let her, हम्म. explore herself. उसको she will take her own decision, any independent woman for that matter. And that was, displayed in this poetry. कि शहरी कविता कैसी होती है, तो उसको वो जो नदी पहाड़ वगैरह उसको वो शायद समझ ना आए कभी, पर उसे आप बोलोगे हाँ कि जी. हाँ आपने यूर स्ट्रॉन्ग वुमेन हु हैड कम अप, तो उसी के बारे में था. वेरी नाइस. दिस इज वेरी एम्पावरिंग ऑल्सो इन अ वे, नहीं कि या आप एक औरत को
उसका अस्तित्व खुद जीने की आजादी होनी चाहिए. Yes, She should have yes, the ability or the opportunity to path her, to yes. carve her own path out in the world. Yeah, she can take her own decisions. We really do not have to kind of praise her with all the beauty wala Hmm. metaphors and similes and all that. That needs to change. Gee, exactly. We really need to change our narratives. We really need to change our words at times, हम इतने वो True. फंस गए हैं पुराने वर्ड्स में कि उनके Hmm. मायने ही गुम हो चुके हैं कई लफ्जों के. तो खैर, चलो Hmm. कोई नहीं. जूही, अब ये बताएं, व्हाट नेक्स्ट? वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हियर? एक ये पोएट्री बुक हो गई, अब आप और क्या काम Hmm. कर रही हैं तो और क्या I हो? have generally contributed to building communities as well. तो मेरे पास अभी जो है I have always been encouraging people to read. So Pune Book Lovers and पढ़ने लिखने वाले, there are two groups that I lead, and kind of जी. encouraging people to join and do books together. Also, I हम्म. have done some 22, 23 assignments already as an editor, co-author, translator. So वो जर्नी हम्म. पैरेलल चलता रहेगा. स्टेज परफॉर्मेंसेस भी अब थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं नाउ दैट आई हैव टाइम. एंड मेरा फोकस हमेशा, मृदु जी, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि टू ब्रिंग दी लॉस्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री ऑफ एनी लैंग्वेज टू टुडेज रीडर्स. लाइक हिंदी में अगर बात हम्म. करूं तो दोहा, सोरठा, कुंडलियां, कहमुकरी मेरा बहुत पसंदीदा फॉर्म है. चौपाई, आज वो लोग मतलब वो नहीं लिखा जा रहा है ज्यादा उतना, क्योंकि सब लोग फ्री सही वर्सेस की तरफ ख्याल है. मुड़ गए हैं. नहीं तो किया. and they are beautiful forms. They're so cute and they should be tried. And in German language, I've tried Eleveni and all this. सॉरी जूही, आई एम सेइंग तय मुक्तरी के बारे में जरा बताओ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट Okay. आई हैव नॉट heard or done Okay. before. ये क्या So होती है? Kehmukri is a four-liner wherein you kind of in first three lines it's a riddle. It was apparently, I mean, there is one school of thought that it started with Amir Khusro. जब उन्होंने पहेलियां लिखना शुरू किया, तो in first three lines two girls are talking. Again, why I like this अच्छा form is अच्छा because अच्छा. there are two ladies talking, and the one अच्छा. lady tells the other that this is my these are the three things, and then she says, okay, are you talking about your husband or beloved? And she just अच्छा. मुकर जाती है वो जी. She just refuses, no, I'm not. And this is what I loved. ओके. And then I translated, I tried experimenting it with other riddles, like not only the beloved, because earlier girls never had a confidante, and this is the between the two friends. तो एक सुनाती हम्म. हूँ आपको, तो then it will be हाँ जी. easier for you. तो कह जी. के मुकर जाना, hence it is कह मुकरी. So हाँ जी. सूखी चिकनी है प्रवृत्ति, रुके ना पानी टिके ना मिट्टी. सूखी चिकनी है प्रवृत्ति, रुके ना पानी टिके ना मिट्टी. चर्म सुंदर, हम्म. कर्म है मैला. हाँ मानव, ना प्लास्टिक थैला. तो you need to compare two things, the plastic bag and the human. ओके. नहीं In the समझ fourth आया line, मुझे when आपकी you are बात. asking me ki acha, are you talking about the human being, I would refuse, no, I'm not talking about human being, I just said something about the plastic bag. ओके. सो ये तो थोड़ी वो आम बोलचाल, थोड़ी सी छेड़छाड़, उस प्रकार की बातें हो उस गई. तरह से हो सकता है, मतलब जैसे बादल है तो ऐसा की हाँ साजन ना जी. सखी सावन, ऐसा. हाँ. सो दिस जॉनर हैज हाँ. बीन यूज्ड इन मूवीज आल्सो, जब वो Yes, दिखाते हैं it कि is in Ranjana movie, there is a song which is used. सॉरी, व्हिच वन? Ranjana व्हिच movie सॉन्ग? में एक song है, ऐसा की साजन ऐसा की सावन. अच्छा. ओ, अब तो ये गाना और ध्यान से सुनना पड़ेगा इसके जी बाद बिल्कुल फिर समझ. सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए. So it's a like 16 syllable count, and there is a technique to write it, and I really would want more people to kind of read and write about it. दिस इज अमेजिंग. देखो, पीपल, वी लर्न एवरी डे, वी लर्न समथिंग न्यू. और आज हमने ये सीखा है. वी ऑफन हर्ड ऑफ अदर जॉनर्स जो मैम ने सुनाए थे अभी, जो जिनके बारे में जिक्र करा, बट दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू एंड Yeah. अमेजिंग. वी ऑल मस्ट, बहुत सारी फिल्मों में इस तरह में आपने सुना होगा, लड़कियां बात कर रही Hmm. हैं, गाना गाते हुए एक दूसरे से क्वेश्चंस करती हैं एंड स्टफ. इट इज Yeah, अमेजिंग. वेरी वेल, it वेरी is. It नाइस. is. बहुत अच्छा लगा ये तो. Yeah. Yeah. बहुत हल्का फुल्का भी रहा होगा उन दिनों में इस तरह बात करना. आई रिमेम्बर देयर वाज Yes. दिस Yes. मूवी
called it is. खूबसूरत which had रेखा in it. तो वो लोग सब एक दूसरे से छंद काफिये में में बात कविता करते हैं। काव्य में बात करते थे। जी, जब उनका जी। मूड बनता था, they had to talk like that. या So I remember this. तभी मुझे ये फिर उसके एसोसिएशन में लगा। Lovely. हाँ, हाँ। What are you personally working on in terms of coming out with a new book? Are you writing a novel or are you continuing on poetry Um, itself? Yeah, I am planning an anthology now, and I follow principle of until done, tell none. So Ah, kind of so anthology is that's what? A like short I've been asked story to or contribute to a poetry? few books, but yes, I am planning an anthology soon. Okay. And your short stories, I would like to dwell on that a little bit now. Sure. Poetry कर ली हमने आपकी और गुण भी जान लिए. But short stories के बारे में बताएं. What all have you written about? What has that genre been? Has it So, been poetry I had or is written it very few, Mrituji. I have written this something called as Alice in Techtopia, and there is part two of it wherein Gulliver and Alice meet. These two characters, our beloved Oh, characters from the childhood, and right. Alice in Techtopia is majorly a girl who kind of travels from a tier one city to Mhm. Bangalore, to a metropolitan city, and how she navigates the IT world. And I've used little. This inspiration from the main novel Alice in Wonderland, and the characters Mhm. kind of resonate with the pre-sales guy like the Mad Hatter. And in the second part, Okay. I have kind of used Alice with Alice meets Gulliver, and Gulliver is now running a startup, and how he Oh, kind of dominates the Lilliputians. I love Like the the Stark imagination CEO. and I love the way the whole thing just crossed over. Total It's a crossover. crossover. It's a crossover of Alice and Gulliver, and she kind of, Oh, then become friends with him at the end. Yeah, my God, two different stories. उनका कोई तालमेल नहीं कहीं and they just met with each other. yeah, Wow, this sounds yeah, very interesting. This is something like yeah. the new series that have come out with, an alternative Harry Potter series and all stuff. So I Yeah, guess you're also possibly people really loved it, experimenting. and they said that you should try because anyway we have to Yes, bring the same thing. It's like known characters within an unknown world. So yes, sounds very, very interesting. What is it called? I would love to pick this one up, So if first nothing else. part is Alice in Techtopia, which is on my blog Okay. juhigupte.wordpress.com, and it's on Okay. medium.com as well, wherein I really write. And the second Great. part is Alice and Gulliver. So I'm kind of forgetting the title, of course. So yeah, Okay. Good. No problem. We'll check you out more, a little more detail, man. We'll figure out where to find these. Okay, so sure. before I let you go, you have been sitting in the Yeah. backdrop of amazing awards. Please, could you just Hmm. point out which is the Rashtriya Samman Wala Award? That is, I'll I have to think the move a highest bit. The honor. bigger one, the biggest one is the Rashtriya Samman, and biggest in literally and in the size as well. जी, इसीलिए मैं आपसे उसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ because I do understand the value of that one more than any. Yeah. Lovely. What Yeah. all you won? Where? I mean, this is amazing at such a young age, Hmm. and for someone Thank you so so new much. to this, you are quite a achiever. And I'm so glad that we Yeah, I had this mean, chance to host you today and talk to you. thank I you. really wish we get a chance with your. It's not necessary we have to talk to you when you come out with a new book. I'm sure we can Sure. find something in between to talk about poetry, for example. And I would love to introduce and have some people who actually read, write, and understand poetry more than me to meet up Hmm. and talk with you. Let's see if we can Sure, sure. have I that mean, you did a arranged. fab job. Yes, yes. And on this note, just for today, I will say Shabba Khair, but I would like to ask Sanjay ji to step in and help me thank Juhi on sharing her time with us. This entire beauty of poetry that she has presented, as well as the little detail that she shared with me today, which I am actually taking back. Repeat that name for me, that form of poetry कहा जो आपने मुकरियां मुझे अभी बताई. कहा मुकरियां. कहा मुकरियां Yeah. Okay, कहा It's मुकरियां. कहना and mukarna, Beautiful. which we all do. So it's fine. Yes, Easy to right. remember. Now I get it. So And thank now you. it will be easy to Yeah. So remember. thank you, Madhu. Hanji, sir. Thank you so much, and thank you, Juhi, for being with us.
That was Juhi Thank you, Gupta sir. thank you. That was Juhi Gupta for you. Do read her book, Amaltas Ka Aanchal, and share your thoughts. Today's episode was brought to you by Kala with Wellness Partners. Let's talk. And if you missed any part of it, the recording will be available on Kala YouTube channel at Sanjay Chandra 5376. So see you next time. Till then, take care and enjoy the rest of your Sunday evening. Thank you. Bye Good bye. night, folks. Thank you so Good night. much.